बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर सज्जाद आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टैटिस्टिक और इसकी टाइप्स के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में बताया जाएगा इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक, इसकी टाइप, स्टैटिस्टिक के फंक्शंस, लिमिटेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्प्लीमेंटेशन टू एजुकेशन। तो रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त आप तक पहुंच सके। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक में द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस और द इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा। जो स्टैटिस्टिक का वर्ड है ये लैटिन वर्ड स्टेटस से डिराइव्ड हुआ है, जबकि इसकी डेरिवेशन इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा से हुई। इट मीन्स अ पॉलिटिकल स्टेट और गवर्नमेंट, जिनका मतलब है पॉलिटिकल स्टेट या गवर्नमेंट। We can say that statistic is a science of collecting, organizing, interpreting and reporting data. It is a group of methods which are used for collecting, displaying, analyzing and drawing conclusions from the data. अब इसकी टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक, तो दो मेन टाइप्स हैं स्टैटिस्टिक की। पहली है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, जबकि दूसरी है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक is the branch of statistics which deals with collection, presentation and analysis of numerical data. It is called descriptive statistics. Inferential statistics, the branch of statistics which deals with the procedure of drawing inferences about the population's parameters, is called inferential statistics. कुछ functions देखते हैं स्टैटिस्टिक के। तो following are the main functions of statistics. पहला है to present facts in a definite form और दूसरा है to simplify unmanageable and complex data। तीसरा इसका फंक्शन है to use techniques for making comparisons। Statistic is used to enlarge individual experiences and to provide guidance in the formulation of policies। उसके बाद characteristics of statistics में पहली characteristic है statistics consist of aggregate facts। दूसरी इसकी खसूसियत है कि multiple causes affect statistics। तीसरी जो characteristic है statistic की, data should be numerically expressed, enumerated of estimated। और चौथी जो करेक्टरिस्टिक है वो है statistics are enumerated or estimated according to reasonable standard of accuracy। एक और करेक्टरिस्टिक देखते हैं। इसके मुताबिक statistics are collected in a systematic manner, statistics for a predetermined purpose, statistics are capable of being placed in relation to each other। Importance and scope of statistic में statistic is important in our daily life. We live in the information world and much of this information is determined mathematically with the help of statistics. It means statistics keep us informed about day-to-day happening. Statistics is frequently used by the researchers. They use statistical techniques to collect relevant data, otherwise there may be loss of money, time and other resources. Statistics has widely been used in psychology and education to determine the reliability and validity to a test, factor analysis, etc। लिमिटेशंस कुछ देखते हैं स्टैटिस्टिक की, जिनमें पहली लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक्स डील ओनली विद क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा लाइक हेयर कलर, ब्यूटी एंड ऑनेस्टी कैन नॉट बी स्टडीड डायरेक्टली। इट डील्स विद एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। Single observation is not the scope of statistics. Statistical techniques deal with population or aggregate of individuals rather than with individuals. It cannot be handled without good understanding and expertise. Statistics relies on estimation and approximation. Statistical results might lead to fallacious conclusions. Educational research में statistics की क्या application है, तो इसको देखते हैं। Statistics enter in the process right from the beginning of the research, when whole plan for the research, selection of design, population, sample, analysis tools
and techniques etc is prepared. Statistics play a big role in medical field. Before any drugs prescribed, pharmacists show statistically valid rate of effectiveness. तो ये थी आज की वीडियो देखने और सुनने का बहुत ज्यादा शुक्रिया. कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग अस. जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त आप तक पहुंच सके.